the more strength the planet is sitting with, the more prominent the yoga becomes. Very simple. And I'll not go back to again the basics where we know how we have to assess the planetary strength, which is basically nothing but we look at the Shadbala, and we all understand in Shadbala the different 6 balas that we refer to and which has more importance. Now, if we talk about Dhan Yogas, this Dhan Yoga has nothing to do with the Raj Yoga, guys. And in Kali Yoga, people also refer to Dhan Yoga as Raj Yogas because everyone is just running after moolah, everyone is running after money and gains, to say it in simpler words. However, there can be planets which are forming a Raj Yoga and they may be also forming a Dhan Yoga. Okay, that's possible because at times, again, we'll have to look at if the Dhan Yoga, as I said, they are formed by connection between the second house lord, which is primarily the accumulated wealth. I've written in brackets as wealth. It's the accumulated wealth. So it's not the salary or the gains or the profits that I make from my vocation, my business, my career, but it is finally how much I am able to accumulate. Okay. These are the assets, the bank balance, the gold, or whatever, the house, the properties, whatever you're able to accumulate. So second house lord, if there's a connection between the second house, the 11th house, the 5th or the 9th. Now just remember this 5th and 9th have equal capability of not only giving you a Raj Yoga, but also it might give you a Dhan Yoga. Because these are the main Lakshmi sthans, the 5th house and the 9th house, as I said. 1st, 5th and 9th are the Lakshmi sthans. And as the name says, Lakshmi, so it's basically even money for that matter and all kind of Lakshmi, okay? And the most powerful being the 9th, then the 5th and then the 1st in terms of the order, the strength these trikonas have. Now the 9th house lord or the 5th house lord can also make a Raj Yoga somewhere because it's a trine lord. And they also can create a Dhan Yoga also if this 5th house lord goes and sits with the 11th house lord, if this 5th house lord goes and sits with the 2nd house lord, if this 9th house lord goes and sits with the 11th house lord, if this 9th house lord goes and sits with the 2nd house lord, and if the 1st house also come into play, and if the 1st house also is somewhere influencing this combination. See, the 1st house is the most important house, guys. I'll tell you why. Because 1st house is we, the physical self, the physical sharir that we are. Everything that the chart is trying to do, everything that the Kundali is trying to tell us is about us. हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीरों का सुख, हमारे शरीर का दुख, हमारे शरीर के लिए पैसा, हमारे शरीर के लिए whatever, okay? Education, हमारे शरीर के लिए success, हमारे शरीर के लिए खुशी. So it's all about us. It's all about the lagna. Now you will see certain charts where the lagna is losing out on strength. When I say lagna is losing out on strength, मतलब first house में बहुत सारे malefic aspects हैं. Malefic aspects means a Saturn is aspecting the lagna. A Mars is aspecting the lagna. Rahu Ketu are aspecting the lagna. So they will have the harsh effect also. They might be giving a Raj Yoga because of their aspect. But please remember they are malefic. So कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आपके लग्ना को, you know, they will be, somewhere it is getting tainted to some extent. Affliction हो रहा है थोड़ा सा. However, अगर वहाँ लग्नेश is sitting with a lot of strength, the 1st house lord is sitting with a lot of strength in the chart somewhere, either in the 1st, in the 5th, in the 9th, in the 10th. कहीं केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान is the ideal स्थान for the lagnesh to be. However, it may be also good if the lagnesh is in the 2nd, वो धन के लिए. It may be also good if lagnesh is in the 11th, again for gains. What I'm trying to say is a Raj Yoga or a Dhan Yoga, at least the good yogas, okay, the good yogas, if the lagnesh also is somewhere linked or is also party to that yoga, then the realization is more significant in one's life. क्योंकि लग्नेश को ही वो सारी चीजें मिलनी है. अब लग्नेश कहीं दूर देश में भाग गया,
पता नहीं कहाँ पे उसको भगा दिया हमने। और यहाँ दिल्ली में उसके जन्म स्थान में बड़े योग बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार आप अगर दिल्ली में रहते तो आपको एमएलए का टिकट मिलता, आप दिल्ली में रहते तो आपको कॉर्पोरेटर तो हम बना ही देते। अब वो सोमालिया में काम कर रहा है, वो दिल्ली में तो है नहीं। तो जितना मर्जी उसको लोग सपोर्ट कर रहे हो, उसको नेता बनाने के लिए यहाँ लोग बैठे हैं कि आप सर आओ और नेता बनो। अब वो सोमालिया से दिल्ली आ ही नहीं पा रहा है। अब सोमालिया में उसे कोई नहीं पूछ रहा, वहां वो डेली लेबरर की नौकरी करता है या डेली वेज की नौकरी करता है या जो भी करता है। नाउ दैट मीन्स द लग्नेश हैज टू बी विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन द चार्ट फर्स्ट थिंग, एंड इट विल बी रियली ब्यूटिफुल फॉर द लग्नेश टू बिकम पार्ट ऑफ दिस राजयोगा। उसका मतलब जहां पंचमेश और दशमेश की मान लो कॉम्बिनेशन आया है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड टेंथ हाउस लॉर्ड के साथ है, राजयोगा बन गया। ट्राइन लॉर्ड केंद्र लॉर्ड, उसी फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ टेंथ हाउस लॉर्ड जहां भी बैठे हो साथ में, वो दोनों मिलकर आपके लग्नेश को देख रहे हो। मान लो लग्नेश बिल्कुल बैंक ऑपोजिट सातवें घर में है, उन्हीं दो योग के प्लैनेट्स के बैंक ऑपोजिट, तो वो दोनों मिलकर लग्नेश को दृष्टि दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जो ये हम राजयोग बना रहे हैं या आपके शरीर को आपको मिलेगा जी, हम आपको ही देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है लग्नेश ही उसमें घुस जाए। कहने का मतलब हमने एक महापुरुष पंच महापुरुष राजयोग की बात करी थी। हमने कहा था पंच महापुरुष राजयोग लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट रखता है, पूरी पूरी जिंदगी, फ्रॉम बर्थ टू योर लास्ट ब्रेथ यू हैव दैट इम्पैक्ट। However, it becomes more significant when the Mahadasha of that planet which is making the Panch Mahapurush Raj Yoga comes into your life. और पंच महापुरुष राजयोगा हमने बोला था जुपिटर से, वीनस से, मर्करी से, सैटर्न से या मार्स से बन सकता है। दैट्स व्हाई द नेम इज पंच, because these are these five planets which Parashara has qualified to be capable or competent to make these पंच महापुरुष राजयोगास। अब ये पंच महापुरुष राजयोगा हमने बोला था केंद्र स्थान में ही बनते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस। हमने ये भी कहा था कि ये फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस में या तो अपनी राशि में बैठे हों और या तो अपनी उच्च की राशि में बैठे हों, तो ये पंच महापुरुष राजयोगा बन जाएगा। पर हर बारी हर के चार्ट में पंच महापुरुष राजयोग जरूरी नहीं है कि लग्नेश से ही बन रहा हो। सेवेंथ हाउस लॉर्ड बना सकता है पंच महापुरुष राजयोगा, टेंथ हाउस लॉर्ड बना सकता है पंच महापुरुष राजयोगा, फोर्थ हाउस लॉर्ड बना सकता है पंच महापुरुष राजयोगा। कुंडली 12 नंबर की है फॉर एग्जाम्पल, मान लो मीन लग्न की कुंडली है, कहीं से भी घूम के अगर शुक्र लग्न में आ गया तो मालव्य महापुरुष राजयोग बन जाएगा, क्योंकि वीनस इज एक्सॉल्टेड इन मीन राशि। ओके, नाउ इन दैट चार्ट वीनस इज द थर्ड हाउस लॉर्ड एंड द एट्थ हाउस लॉर्ड, क्योंकि 12 नंबर की कुंडली होगी तो थर्ड हाउस में नंबर 2 आएगा, बिकॉज द फर्स्ट हाउस इज 12, द सेकंड हाउस इज 1, द थर्ड हाउस इज 2। अकॉर्डिंगली इफ द फर्स्ट हाउस इज 12, the seventh house will be sixth राशि वर्गो, hence the eighth house will be libra। तो पंच महापुरुष राजयोग वहां भी बना, पर उस पंच महापुरुष राजयोग की वजह से बहुत सारे स्ट्रगल भी मिलेंगे उस जातक को, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड पराक्रम का लॉर्ड और अष्टम स्थान का लॉर्ड विच इज स्ट्रगल्स का, ट्रांसफॉर्मेशन का, वो बैठ गया लग्न में उच्च का होके। इस तरह से भी पंच महापुरुष राजयोग बन सकता है। बट अगर यही पंच महापुरुष राजयोग कहीं भी बन रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एरीज लग्न की कुंडली हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एरीज फॉर एग्जाम्पल, मार्स इज द रूलर ऑफ द फर्स्ट हाउस, मार्स इज द लग्नेश। नाउ मार्स गोज एंड सिट्स इन द 10th हाउस इन मकर राशि इन कैप्रिकॉर्न, Mars gets exalted in Makar Rashi, Mars gets Digbali in the 10th house. It's a beautiful place, it's the best place for Mars to be in the horoscope. Now imagine ये जो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना मंगल की वजह से, वो मंगल उस मेष लग्न के जातक या जातिका का लग्नेश है। बट सर कहीं ना कहीं अष्टमेश भी है। लग्नेश को तो दोष लगेगा ही नहीं ना अष्टमेश का। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट हाउस नहीं लॉर्ड, सर, फिफ्थ हाउस लॉर्ड या नाइन्थ हाउस लॉर्ड अगर ट्राइन हो गए तो फिर आप पराशर के हिसाब से आप ऊपर हो गए जी। आपको जैसे ही लक्ष्मी स्थान का स्वामी आप बन गए, फिर आप पे कोई खोट नहीं है जी। थोड़ा बट बहुत सर आपने ये होगा, कहा था कि थोड़ा सा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो शायद रह जाए। थोड़ा सा हाँ, फ्लेवर थोड़ा रहेगा, सा वो हो बहुत जाता है, बहुत ही ना के बराबर, हाँ ना के बराबर, ना बट के बराबर, बट यस फ्लेवर रहेगा, यू आर राइट। हम्म। However, so hence I said, जैसे ये पंच महापुरुष राजयोग मैंने बोला, तो ऐसे ही अगर आप लिब्रा एसेंडेंट हो और आपका पंच महापुरुष राजयोग शुक्र का मिल गया आपको, तो आप बाय डिफॉल्ट कहोगे कि शुक्र तो तुला लग्न का लग्नेश ही होता है, तो इससे अच्छा तो मालव्य महापुरुष राजयोग होगा नहीं, क्योंकि यार वो लग्नेश को ही हमने क्लासिफाई कर दिया पंच महापुरुष राजयोग के लिए। सो हेंस
in any of the yogas, be it a Vipreet Raj Yoga, be it a Nij Bhang Raj Yoga, be it a Raj Yoga, be it a Dhan Yoga, if somewhere the first house lord is also becoming part of that yoga, it is the best thing to happen. And if it is not becoming part of the yoga, then the next requirement is that at least wherever the first house lord is sitting in one's horoscope should be sitting with a lot of strength. If it is completely depleted, then all the good yogas वो मेंटली मैनिफेस्ट ही होते रहेंगे, आपको अनुभूति